हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड. लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट. So I think this graph was completed. Please, at least any one of you let me know. Resource allocation graph. ये ग्राफ मैंने आप लोगों को समझा दिया था. This multi instances with deadlock. I think deadlock management से we have to start, right? Yes, yes. Or no? Okay. So how many of you are listening? Please raise your hands. Okay, Kushal. Okay, Bhavanshi. Yes, ma'am. तो आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? मैम एक्चुअली मैंने करा था बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, वो थोड़ी देर से होगा आई गेस. I don't know why it didn't. Dhruvel 87. Manthan Mosmi 92-94. Yes, ma'am. So you also haven't raised your hand. 92. Manthan not replying. Then 139 and 18. 118 and 139. Okay, 139 is already not there. Now, yes, Parth 176. Yes, ma'am. Last time क्या पढ़ा था? हाँ बोलो, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? पार्थ थ्रेडिंग के बारे में. थ्रेडिंग के बारे में. ओके. और शेड्यूलिंग. मतलब डेडलॉक स्टार्ट नहीं हुआ था, ये कहना चाहते हो आप लोग? ना, डेडलॉक स्टार्ट हुआ था. डेडलॉक के बारे में आपने बेसिक समझाया था. बेसिक्स मतलब मैंने ये पूरा ग्राफ भी समझा दिया था. अकॉर्डिंग वही उसमें वो बाकी एक्सप्लेन करना बाकी है कि वो डेडलॉक में लास्ट में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब. ठीक है. So deadlock management. Deadlock can be managed by 4 of these ways. Okay. Deadlock prevention is one way. Like हम कहते हैं कि prevention is better than cure. तो हम पहले prevention लेना प्रेफर करते हैं. हमें अगर सपोज ऐसी टेंडेंसी है कि हम आइसक्रीम खाएं और हमें सर्दी गला खराब हो जाए तो हम आइसक्रीम खाना अवॉइड करते हैं. इसी तरह से better to prevent the deadlock. Okay. तो कैसे किया जा सकता है डेडलॉक को प्रिवेंट, वो हम देखेंगे. नाउ डेडलॉक अवॉइडेंस. अवॉइडेंस यानी कि ट्राई करो जहां तक हो सके कि डेडलॉक ना हो, पॉसिबिलिटी को रोक सके. ठीक है. अगर हमें फील होता है कि होने ही वाला है डेडलॉक, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जाएगा. एंड देन डेडलॉक, अगर डेडलॉक हो ही जाता है तो उसको डिटेक्ट करना,
बाद उसको रिकवर करना सिस्टम को डेडलॉक में से। तो ये these are the 4 methods of deadlock management. तो हम अगर डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करें तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। These are the 4 conditions. अगर ये चारों कंडीशंस एक साथ होती है, ठीक है, अकर होती है, then there is a deadlock confirm, ठीक है। इन द लास्ट मैंने आपको बताई थी ये 4 कंडीशंस, जब डेडलॉक पढ़ाया था तब हमने ये 4 कंडीशंस देखी थी। कॉफमैन कंडीशंस इनको हम बोलते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, ओके, देन नो प्रीम्पशन एंड देन सर्कुलर वेट, ठीक है। तो ये हमने 4 कंडीशंस देखी थी। अगर इफ ऑल these 4 conditions occur at the same time, ठीक है, if all these 4 conditions, if 4 conditions hold true, ठीक है, then there is confirm a deadlock, ठीक है। तो हम प्रिवेंट कैसे करते हैं डेडलॉक को? हम ये चाहते हैं कि ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ना हो, so that we can prevent deadlock. भाई कैसे? How is this possible? Let us see. Now mutual exclusion. जब मैं बात करती हूँ mutual exclusion की, तो मैं आप लोगों को वो डायग्राम से ही समझाती हूँ। तो mutual exclusion क्या कहता है? Non-shareable resource. This condition must hold for non-shareable resource. अगर resource non-shareable है, ठीक है, for example, a printer cannot be simultaneously shared by several processes. In contrast, shareable resources do not require mutually exclusive access and thus cannot be involved in a deadlock. यानी कि प्रॉब्लम कब आएगी? When there is a non-shareable resource. अगर कोई रिसोर्स है, जैसे कि प्रिंटर जो कि एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, अगर P1 प्रोसेस इज वर्किंग विद द प्रिंटर तो P2 कैन नॉट यूज दैट प्रिंटर एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ अगर P2 को चाहिए प्रिंटर तो वो रिक्वेस्ट करेगा प्रिंटर की, राइट। P2 प्रोसेस विल, P1 is holding the printer, ठीक है, and P2 is requesting for the printer. P2 is requesting for the printer. Now suppose P1 is holding the printer and P1 उस printer के साथ वर्क कर रहा है, it is working with the printer and it is not releasing that printer. Then P2 will not be able to work with that printer. So in इस कंडीशन में क्या होगा? P2 has to wait. कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक P1 जो है उस प्रिंटर को नहीं फ्री करता। तो अब ये this is the problem with non-shareable resource. अब if it is a shareable resource, अगर रिसोर्स शेयरेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, ठीक है। एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन एक्सेस दैट रिसोर्स, ओके। अ गुड एग्जांपल ऑफ शेयर रिसोर्सेज रीड ओनली फाइल्स। सो रीड ओनली फाइल्स क्या होती है? दे कैन बी read by many number of processes. उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, because if several processes attempt to read only file at the same time, then they can be granted simultaneous access. तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। But when we talk about shareable resource, a process need not to wait for the shareable when we talk about non-shareable resource, ठीक है, so non-shareable resource के केस में डेडलॉक होने के चांसेस हैं, ठीक है। Generally, deadlocks cannot be prevented by denying the mutual exclusion condition because there are some resources that are intrinsically non-shareable. So अगर मैं आप लोगों को ये डायग्राम से समझाऊं, ठीक है, तो here if you see this diagram, so this resource is allocated to process P1. Okay. Now suppose if process P1 needs resource R2, okay, ठीक है, and this R2 resource मैं उसको कैसे डिनोट करूंगी? एक रेक्टेंगल। R2 resource is already held by some process, suppose P2, ठीक है, and suppose P2 is waiting for some resource R3, ठीक है, some resource R3 which is held by what? Suppose P3 process, and P3 process is requesting for R1, but this R1 is allocated to P1. So ये एक तरह का क्या हो गया? साइकिल फॉर्म हो जाएगी, because all these resources are non-shareable. अगर shareable होते ये सब resources तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, but because these resources are non-shareable,
this resource 1 if it is allocated to process P1, तो तब तक P3 cannot work with resource R1. It has to wait. जब तक R1 release नहीं हो जाता, P3 has to wait because it is non-shareable resource. So that's why this is the condition with non-shareable resources के साथ problem क्या है कि deadlock की conditions occur हो सकती है, ठीक है. But अगर हम हमें क्या करना है, डेडलॉक प्रिवेंट करना है. हाउ कैन वी प्रिवेंट डेडलॉक? ठीक है, बाय यूजिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ दैट रिसोर्स. अगर हमारे पास एक प्रिंटर की बजाय मल्टीपल प्रिंटर्स हैं, देन वी कैन अवॉइड डेडलॉक. ओके, और वी कैन प्रिवेंट, नॉट अवॉइड बट वी कैन प्रिवेंट दैट डेडलॉक. ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को बात? वासु, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Vasu. Vasu, is it clear? Yes, ma'am. Okay, 134. Clear? Okay. Now hold and wait. So hold and wait वही हुआ, ठीक है, कि this resource R1 resource is allocated to P1 and P1 is waiting for this R2 resource. ठीक है, तो hold and wait नाम कहाँ से आया था? P1 is holding this R1 resource and it is waiting for this R2 resource. ठीक है, so that's why the name comes from here, hold and wait. So ये condition true, ये कंडीशन जो है, इफ दिस कंडीशन अराइजेस, डेडलॉक होगा, ठीक है. बट हम नहीं चाहते कि डेडलॉक हो, तो हमें ये कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा कि कोई रिसोर्स इट इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड इट इज वेटिंग फॉर सम अनदर रिसोर्स, ठीक है. सो हमें इस कंडीशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा. होल्ड एंड वेट कंडीशन अकर्स व्हेन द प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स and is also waiting for some other process to complete its execution. So it is waiting for R2 and it is holding R1. Thus, if we did not want the occurrence of this condition, then we must guarantee that when a process requests a resource, it does not hold any other resource. So अगर हमें ये condition को break करना है, तो हमें ये make sure करना पड़ेगा कि suppose if P1 is requesting for R2, then P1 is not holding R1 at the same time. So we have either hold or wait. ठीक है, यानी कि wait, if it is waiting for R2, then it must not hold R1. So हमें ये condition को, we have to break this condition of hold and wait. Okay, so there are some protocols that can be used to ensure that hold and wait never occurs. According to this, each process must request and gets all its resources before the beginning of execution. So, according to this, क्या हो रहा है? Suppose if process P1 is there and वो ये कह रहा है कि P1 को जिस भी resources की जरूरत है, वो at the beginning of execution में उसको held कर, ठीक है? Suppose process needs one USB, okay, one printer. अगर प्रिंटर की जरूरत है उसको तो वन प्रिंटर. तो सपोज ये दो डिवाइसेस की जरूरत है प्रोसेस P1 को, तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन इट विल होल्ड बोथ दीज डिवाइसेस. नाउ सपोज इट इज करंटली इट इज यूजिंग USB बट नॉट प्रिंटर. तो प्रिंटर क्या होगा? प्रिंटर इज हेल्ड बाय P1, बट व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोटोकॉल? एंड डिसएडवांटेज ये होगा कि व्हेन P1 इज वर्किंग विद USB, the printer is idle, and when the printer is idle, other processes, suppose P2 also wants printer, will not be able to use this resource. Why? Because P1 is already holding this resource. ठीक है, P1 is already holding this resource, sorry. So हमें डेडलॉक की कंडीशन बचानी है, नहीं होने देनी है. उसके लिए एक तरीका ये है कि कोई भी प्रोसेस सारे रिसोर्सेस को एग्जीक्यूशन के पहले ही होल्ड कर ले, ठीक है, सो दैट उसको सभी रिसोर्सेज अगर पहले मिल जाएंगे तो उसको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. सो नाउ प्रोसेस P1 डज नॉट हैज टू वेट फॉर एनी रिसोर्स. बट उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि
is idle for most of the time. Okay, when P1 is using USB. Now the second protocol allows a process to request resources only when it is not occupied by any other resource. So दूसरा प्रोटोकॉल ये कहता है कि suppose P1 needs USB and printer both, तो before execution ना ले, but P1 can use printer only when printer is free and it is not held by another resource like P2. Okay. तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन रोकी जा सकती, इवन रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, इट डज नॉट अलाउ इवन टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज. ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, साइकिल बन जाएगी. ठीक है, लाइक इन दिस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल बन जाएगी. एंड सपोज R2 इज हेल्ड बाय सम प्रोसेस P3. ठीक है, तो ये एक तरह की साइकिल बन जाएगी. सो वी डोंट वांट साइकिल बने. So even this second protocol does not allow processes to request those resources which are occupied by any other process. Clear है? समझ में आ रहा है आप लोगों को, और there is a confusion? Yes, Rajiv? Yes, ma'am, no confusion. समझ आ रहा है आप लोगों को? Are you trying to understand और बस ऐसे ही? प्रथम 132. Yes, ma'am. समझ आ रहा है. Yes. Are you listening? Yes, ma'am. I'm listening. Okay, second is what are the disadvantages of both protocols. तो first protocol का मैंने disadvantage आपको बताया ही. ठीक है, कि भाई first protocol का क्या disadvantage है कि printer will remain idle for most of the time. Second protocol का क्या disadvantage है, there is a possibility of starvation. Starvation की possibility कैसे होगी? Second protocol ये बोलता है कि it does not allow any process to even request resources when it is occupied by some other resource. Okay, so suppose this P1 process is holding R1 resource. Okay, now suppose this P2 process needs R1, but because this R1 is already there with P1, it will not be able to even request भी नहीं कर पाएगा. This P2 will not be able to request for R1. अब क्या होगा? There is a possibility of starvation. Starvation यानी कि हो सकता है कि P2 हमेशा के लिए वेट करता रह जाए, वेट indefinitely, indefinitely. ठीक है, because at least one of the resources that it needs is always allocated to some other process. Suppose ऐसा हुआ कि जैसे ही P1 ने R1 को रिलीज किया, ठीक है, एंड R1 किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को अलोकेट हो गया, सपोज P3. ठीक है, नाउ P3 जो है वो इट इज होल्डिंग दिस R1 रिसोर्स, सो P2 को अगेन वेट करना पड़ गया. सपोज अगेन क्या हुआ, P3 के बाद सपोज P1 इज होल्डिंग दिस R1 प्रोसेस बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑफ हायर प्रायोरिटी देन P2. Then again P2 वेटिंग मोड में चला गया, so P2 has to wait for long and there are possibilities of starvation. ठीक है, so these are the disadvantages of both protocols. Now no preemption. What is no preemption? यानी कि no snatching. So suppose if I show you from this diagram, now no preemption में कैसा है, suppose this resource R2 is allocated to process P2. Okay, then P2 is requesting for R1 and R1 is allocated to process P2. Now इस process P2 को complete होने के लिए R1 की जरूरत है, right? But this R1 is with what? Process P1. जब तक P1 finish नहीं हो जाता, P2 finish नहीं हो पाएगा. ठीक है, why? Because of the policy of no preemption. But अगर हम इस policy को break करते हैं, if suppose process P2
while P1 is executing, process P2 preempt this resource or snatches this resource from P1, okay, and takes this resource R1 with P1 from P1, then P2 will be able to complete or finish, ठीक है. So no preemption यानी कि बीच में से वो snatch नहीं कर सकता resource, but हमें इसे break करना है. So P2 can preempt the resource in between the execution, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ होगा. So the third necessary condition क्या है for the deadlock is that there should be no preemption or no snatching of resources that are already been allocated. In order to ensure that this condition does not hold, following protocols can be used. According to the first protocol, if the process that is already holding some resource requests another, if the process that is already holding some resources request another resource, and if the requested resources cannot be allotted to it, then it must release all the resources currently allocated to it. यानी कि क्या कहना चाहता है ये? Let me see. Okay, so what it is saying according to this first protocol, ये क्या कह रहा है कि suppose P1 is there, ठीक है, P1 process है and suppose it is already holding this R1 resource. Now P1 process needs R2 also, ठीक है, but R2 process is already there with P1. Now P2, okay. R2 process is already there with P2. P2. Now समझो अब एक चीज कि P1 process needs R2, which is already there with P2. तो अब ये कह रहा है because P1 जो है अब execution complete नहीं कर पाएगा because R2 is not available. Okay, R1 is available but R2 is not available. So because P1 will not be able to finish its task because R2 is not available, P1 voluntarily it will release its R1 resource also and it will stop its execution. Then it must release all the resources currently allocated to it. ठीक है? So उससे क्या होगा अगर वो R1 को भी release कर देगा तो R1 किसी और प्रोसेस को चाहिए तो वो प्रोसेस यूज करेगा and currently P1 will not execute. Then P1 will execute, P1 will execute when both R1 and R2 will be available. ठीक है? So that it does not has to wait for long और starvation में ना चला जाए, right? So it will release all its allocated processes. Why? Because it does not have R2, it does not have one of the process which it wants. Okay. Now second protocol क्या कह रहा है? When a process requests some resources, if they are available, then they are allocated to them. Okay. If in case the requested resource is not available, then we will check whether it will being used or is allocated to some other process, waiting for other process. If that resource is not being used, then operating system preempts it from the waiting process and allocate it to the requesting process. And if the resource is being used, then the requesting process must wait. Okay. So second protocol क्या बोल रहा है? Let me draw a diagram. Yes. Now second protocol is saying, suppose P1, वही same condition लो, P1 is holding R1 and P1 needs R2. Okay. Now this R2 is already there with suppose P1. According to first protocol, अगर R2 P1 के साथ allocated है, then P1 will release R1 also
R1 को भी रिलीज कर देगा वो. Okay, so that it does not has to wait for long. But according to second protocol, what operating system will check? Operating system check करेगा कि क्या P1 is actually using this R2 currently. हो सकता है कि suppose if P1 is using USB, ठीक है? P1 is using USB, but R2, which is a printer, currently it is not in use. Currently it is not in use. It is idle. Then operating system will snatch or preempt this R2 from process P1 and it will give this R2 to P1. Sorry, this is P2. So it will snatch this R2 from P2 and it will give this R2 to process P1 so that P1 can complete. Okay. So these are the two things which can happen. Okay. तो नो प्रीम्पशन नहीं, प्रीम्प्ट करना है. सेकंड प्रोटोकॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रीम्प्ट दिस R2 फ्रॉम P2 एंड इट विल गिव दिस R2 टू P1. ओके, देन सर्कुलर वेट. व्हाट इज सर्कुलर वेट? So the fourth necessary condition to cause deadlock is circular wait. In order to ensure violate this condition, तो अगर हमें इस कंडीशन को नहीं होने देना है, यानी कि वायलेट करना है, then following things can be done. What? Assign a priority number to each resource. So अगर हम हर रिसोर्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, okay, there will be a condition that any process cannot request for a lesser priority resource. This method ensures that not a single process can request a resource that is being utilized by another process and due to which no cycle will be formed. For example, let us see क्या example है. Assume that R5 resources allocated to P1. तो ये बोल रहा है कि suppose P1 है, ठीक है, P1 process है, तो R5 is allocated to P1. ठीक है, okay. If the next time P1 asks for R4, now if P1 is asking for R4, okay, आप देखो मैं एरोस किस तरफ बना रही हूँ. R3 that are lesser than R4, R3. Okay, so P1 ने R3 के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, that are lesser than R5. ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी ऑफ R3 एंड R4 इज लेस देन R5, then this request will not be granted. Okay, only the request for the resources that are more than R5 will be granted. तो ये जो रिक्वेस्ट है ये ग्रांट नहीं होगी. Only the resources जिनके प्रायोरिटी हाई है, suppose there is some process R6, ठीक है, उसकी अगर प्रायोरिटी हायर देन R5 है, then only that can be granted. Lesser priority वाले resources cannot be granted. उससे होगा क्या? साइकिल फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सर्कुलर वेट की कंडीशन को हम ब्रेक कर सकते हैं. सो ये टेबल फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन है और समरी है ऑफ ऑल दोज 4 कॉफमैन कंडीशंस. ओके, ये आप देख लेना. It is just the summary of what we studied. Okay. Now deadlock avoidance. Now, हमें क्या करना है? Deadlock avoid. It is better to avoid deadlock. Okay. Rather than take measures after the deadlock has occurred. तो क्या बोल रहे हैं? Suppose अगर रोड पे deadlock हो जाता है, suppose किसी 4 रास्ते पे deadlock हो जाता है, ठीक है? So if possible, if it is possible, we can take another road or another, हम कोई दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, तो हम वहां से डेडलॉक को अवॉइड करके हम दूसरा रास्ता if we can find another lane through which we can go, then it is better. तो ये कह रहा है डेडलॉक को जहां तक हो सके अवॉइड करो. अवॉइड नहीं किया जा सकता, देन हम डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे और उसको रिकवर करेंगे. ठीक है, तो अवॉइडेंस के लिए वी यूज वेट फॉर ग्राफ.
जैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था RAG, देयर वाज वेट, देयर इज वन वेट फॉर ग्राफ. ओके, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, 11 o'clock स्क्वाड टेक्नोलॉजीज का जो PPT है, so I have to be there, so I will stop at 11 AM. Okay, because I have to join, so after 10 minutes we will end this chapter. Okay, end this lecture. So just like RAG, that is resource allocation graph, जो हमने पहले पढ़ा था, there is a wait for graph, okay, which we use it in deadlock avoidance method. So it is just wait for graph is just like resource allocation graph only. Okay, हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है वो ग्राफ. ठीक है, आगे आएगा आपको. Now in this deadlock avoidance, we study Banker's algorithm. Yes. So avoidance algorithms. Okay. So avoidance algorithms, the deadlock avoidance algorithm helps you to dynamically access the resource allocation state. कि भाई कौन से resources allocated हैं किस process को, so that can never be a circular wait condition. तो हम कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलोकेटेड है और कितने चाहिए उसको, क्या नीड है, वो सब हम देखते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड दिस सर्कुलर वेट वाली कंडीशन. तो ये सर्कुलर वेट वाली कंडीशन को हम अवॉइड कर सके, उसके लिए दिस अवॉइडेंस एल्गोरिथम इज देयर. ठीक है, व्हिच एल्गोरिथम? बैंकर्स एल्गोरिथम. A single instance of a resource type uses a resource allocation graph. अब ध्यान से दो, if there is a single instance of resource types, ठीक है, अगर resources के single instance है, then we use this method to check if there is deadlock or not. ठीक है, resource allocation graph. And if there is a cycle in the graph, then there is a deadlock. Definitely there is a deadlock. Cycle is necessary and sufficient condition for deadlock. ठीक है, if there is a cycle in single instance case, then there is a deadlock. ठीक है, हमने पहले भी ये चीज देखी थी. If there are multiple instances, then cycle is the necessary condition, but it is not the sufficient condition for deadlock, and then we use Banker's algorithm. So here you can see, हमने last time resource allocation graph में देखा था. We studied 3 example here. So this is the diagram of single, where we have single instances of resources. So this is single instance without deadlock. ठीक है, इस ग्राफ में कोई deadlock नहीं है, right? But इस ग्राफ में there is a cycle. Here you can see there is a cycle. Multiple instances हैं and there is a cycle, but there is no deadlock. Okay, so in case of multiple instances, cycle is not the sufficient condition for deadlock. अगर single instance के केस में यहाँ पे अगर cycle होती कहीं पे, then definitely deadlock होता. But multiple instances के केस में, if there is a cycle, it is not necessary that there is a deadlock. Now in the third example, here you can see this is one cycle and here this is second cycle. There are cycles. Hello. Okay, so मुझे कंपनी से कॉल आया, so I have to go. We will continue later on, but let us complete here. Hello. हाँ.
Okay, students, because I am getting calls from the company, we can stop here. We will continue from this deadlock avoidance in the next lecture. Okay, I have already downloaded the attendance sheet, so you can leave now.